Okay, fine. Let's start. So last class में अपने time and work देख लिया था. Almost we had discussed various types of questions, and we have practiced a lot of questions. A quick review by 2-3 questions more. वो हम खत्म कर लेते हैं फटाफट. And then we'll move on to the next topic, time and distance. वो भी बहुत interesting topic है, and one of the most famous topic you can say which has been asked. Let's start with that one. Yes, this one. If you can do that.
Okay, let's see how this question can be solved. The answer that I got, yes, that is correct. 60 days. That is the correct answer. Uh, and let's see how we can solve this. So A and B together can do a piece of work in 30 days. A having worked for 16 days, B finishes the remaining work alone in 44 days. So A ने अकेले काम किया 16 days, B ने काम किया 44 days. Right. अगर आप टोटल करते हो तो टोटल टर्न आउट टू बी 60 days only. So 30 और 60 दो नंबर हमारे पास आ रहे हैं. You can either take 30 or 60. I'll take work content to be 30. Make my calculations simple. So work content मैंने ले लिया 30, right? And time taken is also 30 together. Time of A plus B is also 30. So speed जो हो जाएगी, the speed of A plus speed of B will be work upon time, that is 30 over 30 यानी कि 1. So that I got. Now अब ऐसा दिया हुआ है the 16 times speed of A, right? क्योंकि 16 डे तक A ने काम किया हुआ है प्लस 44 टाइम्स स्पीड ऑफ B, क्योंकि लेस जो काम किया हुआ है 44 डेज उन्होंने किया हुआ है. So ये दोनों जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो काम खत्म होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू वर्क कंटेंट. वर्क कंटेंट हमने कितना अज्यूम किया हुआ है, दैट वी हैव अज्यूम टू बी 30. तो इतना काम खत्म होता है. ठीक है. सो ये एक इक्वेशन है जो बहुत क्रिटिकल है. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 जो है दैट इज द ओनली थिंग व्हिच इज क्रिटिकल ओवर हियर. अब मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन 1 से किसी भी एस ए की या एस बी की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. सो लेट्स डू दैट. सो इफ आई 16 देखो मुझे बेसिकली निकालना बी है, बी अलोन निकालना है. सो आई विल सब्स्टिट्यूट एस ए. एस ए विल बी 1 माइनस एस बी प्लस 44 टाइम्स एस बी इज इक्वल टू 30. क्या किया मैंने, फ्रॉम 1 टू 2 किया. दिस बिकम 16 माइनस 16 एस बी प्लस 44 एस बी इज इक्वल टू 30. और इसको अगर आप सॉल्व करते हो यू विल गेट 28 SB is equals to 40. Or further on simplifying, this will give you the value of SB equals to 14 by 28 यानी कि 1 by 2. So I got the speed of B. I got the speed of B. Work content मेरे पास है. I need to find out the time. So time taken by B is equals to work upon speed. अब मेरे से क्या पूछा रहा था, whole work will be equivalent to the work content, that is 30, and speed of B जो मैंने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया, that is 1 by 2. तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 30 क्रॉस 2 is equivalent to 60 days. Right, so I use the same method that we have discussed in the last class. just थोड़ा अलग ट्विस्ट वाला क्वेश्चन था, तो अलग तरीके से यूज किया हुआ है, nothing else. Right, let's move on to the next question. Let's try to solve this one. Ten days, sir. Yeah, I got one answer. Let's see कैसे होगा ये. So I have three numbers over here: 24, 9, and 12.
right? 3 is already there, so 3 को हम बाद में use कर सकते हैं, but I'll try to find out the work content which is LCM of these three numbers. So I need to find out the LCM of 12, sorry 24, 9 and 12. So अगर देखा जाए तो मैंने आपको कल एक मेथड बताया था that you always start with a bigger number. तो 24 से चालू करते हैं. So 12 is divisible, sorry 24 is divisible by 12, तो 12 को consider नहीं करना है. Only thing I need to consider is 9. So 24 divided by 9 not possible. 24 to the 48 divided by 9 again not possible. That is 72. 72 divided by 9 is possible. So 72 will be the LCM. Shortest method. बाकी आपको जो typical method है आप वो भी कर सकते हो. ठीक है. So this is 72 you'll get. Now let's just assume this to be equal to your work content. This is your work content. Now let's find out the speed. The speeds of A, B, and C. The speed of A will be equal to 72 upon 24, that is 3. The speed of B will be equal to 72 upon 9, that is 8. And the speed of C will be equal to 72 upon 12, that is 6. तीनों की स्पीड आ गई मेरे पास. अब हम देखते हैं B और C. So B plus C they are working. So उनकी स्पीड हो जाएगी. Speed of B plus C will be equal to 8 plus 6, 40. And work they have done in 3 days. Work done in 3 days will be 14 into 3. That is 42. 42 units काम हो चुका है. 72 total है. We'll find out the remaining work. Remaining work will be equal to 72 minus 42. That is equivalent to 30. 30 units काम बचा हुआ है. Now I need to find. So we know will be equal to work upon speed, or rather than remaining work. So remaining work here is 30 units and the speed is 3. So 30 by 3 simply will be 10. 10 days is the correct answer. Yes, the correct answer will be 10 days. Am I audible clearly to all of you? Yes, sir. 10 days will be the correct answer. Let's see the next one. This is the last question from time and work. Then we'll move on to time and distance. So 15.2.
Let's see what is the correct answer over here. X can do a piece of work in 40 days. He worked it for 8 days and then Y finished it in 16 days. So how long will it take together to complete the work? अभी यहाँ पर बस तीन नंबर है हमारे पास 40 days, 80 days and 16 days. So what I'll do is I'll take the LCM. Let us assume that the work will be equal to 80 days simply. Right. So the speed of X I know. Speed of X is 80 by 40. That's 40, that is 2 units per day. Now he works at it for 8 days. So work done by X in 8 days will be equal to 2 into 8, that is 16 units. So these units. Now 16 unit works is done. Now the remaining work, अगर मैं निकालता हूँ तो it will be 80 minus 16, that will be equal to 64 units. तो इतना काम बचा हुआ है. That is done by y in 16 days. So speed of y I'll get speed of y will be work कितना बचा हुआ है 64 and time taken by y is 62. So 4 units per day. 4 units per day. ये चीज आ गई मेरे पास. I got the speed of x and I got speed of y. अब नेक्स्ट मुझे पूछा हुआ है how long will they take together to complete if work. So time taken by them together. अब टाइम क्या होता है वर्क अपॉन स्पीड. सो वर्क है मेरे पास 80, स्पीड हो जाएगी दोनों की कंबाइन यानी कि 4 + 2 यानी कि 6. सो 80 by 6 यानी कि 40 by 3 days. Is also given as 13 1 by 3 days. Right, so 13 1 by 3 or 40 by 3, anything you write, that is correct answer. Right, so this is your final answer. So this was about time and work. Your final answer is 13 1 by 3. Next topic देखते हैं. That is again one of the most important topic, that is time and distance. So time and distance, what I suggest for you is instead of going towards any of the shortcuts. देखो आप जो 10 बुक रेफर करोगे 10 बुक के अंदर 10 शॉर्टकट दिए होंगे 10 फॉर्मूलेस दिए होंगे. बट दिस इज नॉट द करेक्ट प्लेस टू बी वेरी फ्रैंक. ये सही जगह नहीं है जहाँ पर यू विल बी यूजिंग दोस फॉर्मूलाज और शॉर्टकट्स. व्हाई? बिकॉज इज नॉट अ बैंकिंग एग्जाम और एसएससी सीजीएल आप नहीं दे रहे हो या तो फिर आप कोई ऐसे एग्जाम नहीं दे रहे हो जहाँ पर टाइम बाउंड है और आपको टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. ऐसा कुछ नहीं है. You have enough time, you can use those time. So आप shortcuts से ज़्यादा what we prefer is to go with the basics. So if you are clear with the basics, you can give enough time to each of the questions and you can take time to solve those questions. ठीक है आप लोगों को. अब ये इसके अंदर बेसिक क्या आता है? इसके अंदर बेसिक कुछ नहीं आता है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है जो हमें याद रखना है. स्पीड बेसिकली इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहाँ से दो और फॉर्मूले बन जाते हैं हमारे पास. If I change the subject, like if I change the subject to be time equals to distance on speed. If I change the subject to be distance, becomes speed into time. ये हमको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज. अच्छा, second most important thing that you need to remember is about average speed. So when you see average speed, बहुत सारे shortcuts है that you will find in lots of book. लेकिन याद रखना average speed is never equal to, like अगर आपको दो स्पीड दी हुई है तो average speed is not equal to just v1 plus v2 by 2. ऐसा नहीं है. आप ऐसे कभी भी इसको सॉल्व नहीं करते. rather than how do you solve it? You solve it by finding out the total distance by total time. Total distance divided by total time. अच्छा, एवरेज स्पीड कौन से केस में आती है? सो एक केस ऐसा दिया जाता है कि भाई आपने थोड़ा x डिस्टेंस है, x1 डिस्टेंस है, वो आपने v1 स्पीड में ट्रैवल किया
और x2 डिस्टेंस है वो v2 स्पीड में ट्रैवल किया, या t1 टाइम लिया और t2 टाइम लिया। अब आपको पूरे जो जर्नी है उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। सो इस केस में आप यू कैन नॉट सिंपली v1 बाय प्लस v2 बाय 2, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यू टेक द टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। अच्छा, एक और टॉपिक अच्छा आता है इसके अंदर दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, दैट इज अबाउट रिलेटिव स्पीड्स। रिलेटिव स्पीड्स होते क्या है? रिलेटिव स्पीड्स यूजुअली ट्रेन के केस में यूज किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और जगह पे देखे जाते हैं मेरे पास। इफ टू एंटिटीज, कोई भी दो चीजें दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इन कैरेट केस दैट डिफरेंस ऑफ स्पीड इज टेकन, difference of speed is taken. However, if they are running in different, or rather than different, I'll just make it more clear, in opposite directions. In opposite direction, then instead of difference, what we take sum of speeds. उस केस में हम सम ऑफ स्पीड्स लेते हैं, दोनों की जो स्पीड है उसकी हिसाब से। अच्छा, एक और अच्छी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर into meter per second. Does anyone knows how to do that? 5 by 18. You have to multiply with 5 by 18. Very. It is equal to 5 by 80. Now how do we get that? I'll just let you know that kilometer को पहले हम मीटर में convert करेंगे, so it will be multiplied by 1000. Right? Kilometer, 1 kilometer has 1000 meters. Similarly, hour, 1 hour has 60 minutes and each minute has 60 seconds. This will become meter per second. Now if you solve this up, what you will get is x into, दो जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, you will get 10 by 36 meter per second, or simply x into 5 by 80 meter per second. So ये जो कैलकुलेशन है that is being repeated again and again. So इसको हमें डायरेक्टली याद रख लेना है that convert kilometer per hour into meter per second, you have to multiply by 5 by 80, and similarly from meter per second to kilometer per hour, you will do 18 by 5. Right. So this is this basic thing you need to understand. आप आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ, and और कुछ भी आएगा so that we'll discuss over that time. So try to solve this one. This is the first question of time and distance, and a basic one. Okay, let's try to solve this one. I'll be asking you a question in between. So a policeman goes after a thief who is 1000 meter, who has a 1000 meter start. 1000 meter start कहने का मतलब क्या है? Because before starting, the thief is already running ahead.
right? So the thief is already running ahead, and how much start he has? He has 1000 meter of start. So he is already in 1000 meter, और उसके बाद पुलिस वालों को याद आता है कि मैं इसको पकड़ना है, right? So policeman starts after 1000 meters. Now policeman runs 1 kilometer in 5 minutes and the thief runs 1 kilometer in 8 minutes. So ये दे दिया इन दो के बीच में हमें distance, sorry speed. ये हमको indirectly हमको दी हुई है speed. So let's find out the speed. The speed of first of all policeman. So दिया हुआ है कितना? It's 1 kilometer in 5 minutes, or I can say simply 1000 meters in 5 minutes, or 200 meter per minute. ये policeman की speed है. Now let's do it for the thief. Thief के लिए मुझे दिया हुआ है 1 किलोमीटर in 8 minutes. तो thief को ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब, और पुलिस वाला ज़्यादा फिट है यहाँ पर. Right, so it is 1000 meter upon 8 minutes, and it's turned out to be 125 meter per minute. ठीक है, तो दोनों की स्पीड मेरे पास आ गई है, and I can see policeman is running faster than the thief. So at certain point of time, the policeman is going to catch the thief. Right, we got it from here. Now, how far did the thief go before he was overtaken? अच्छा, overtake क्यों करना है, पकड़ लो यार. Anyways, okay, we'll try to find out that what distance policeman will be able to turn the catch the thief. अच्छा, इसमें हमें thief का distance निकालना है. So thief ने कितना distance travel किया हुआ है. Anyways, let's find out the relative speed first, because दोनों दौड़ रहे हैं and both of them they are running in the same direction. तो जब भी same direction होता है तो speed gets added up or subtracted up. You need to add the speed or subtract the speed. Subtracted. Very good. So in this case the speed will be subtracted. So यहाँ पर 200 minus 125 होगा, that is 75 meter per minute. So relative speed है 75 meter per minute. अच्छा, अब कितना है इन दोनों के बीच में गैप है 1000 मीटर का, स्पीड है 75 मीटर की. तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है द टाइम टेकन बाय पुलिसमैन टू कवर 1000 मीटर गैप. 1000 मीटर गैप कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो बेसिकली ये 1000 मीटर का गैप जो है, ये जो कवर कर रहे हैं, दैट विल बी डन बाय 75 मीटर पर मिनट की स्पीड से. राइट, सो ये मीटर आ जाएगा और ये मीटर पर मिनट आ जाएगा. सो इफ यू सॉल्व दिस वन यू विल गेट सम आंसर. क्या आएगा आंसर? कैन एनीवन टेल मी? फ्रैक्शंस में, ऑब्वियसली फ्रैक्शन. 40 divided by 3. वेरी गुड. इट विल बी 40 डिवाइड बाय 3 मिनट्स. ठीक है, तो 40 डिवाइड बाय 3 मिनट्स के बाद पुलिसमैन है, इट विल कवर अप द गैप ऑफ 1000 मीटर. तो उनके बीच में गैप नहीं रहेगा, मतलब पुलिसमैन विल बी एबल टू कैच द थीफ. लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में मुझे पूछा हुआ है हाउ फार डिड द थीफ गो. सो थीफ का कितने डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकालना है. सो डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय थीफ. इन, अच्छा, कितना टाइम लगा उनको? 40 बाय 3 मिनट लगा उनको ट्रैवल, अपना गैप कवर करने में. तो इतने देर में थीफ ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. अच्छा, स्पीड किसकी लेंगे हम? स्पीड लेंगे थीफ की, और टाइम लेंगे 40 by 3. From here you will get some answer in meter. And what will be the answer? Five thousand divided by 3. Very 5000 divided by 3 meter, or 5 by 3 किलोमीटर. ठीक है, 5 by 3 किलोमीटर में आंसर आएगा आपका. So this will be a final answer. Simple सा question है, just only thing is you need to check out the basics. Let's do the next one. दूसरा कैसा है क्वेश्चन?
सर 2 किलोमीटर का होगा। Okay, that's correct. Very good. Let's solve this question. A man rows upstream 8 kilometer and downstream 30 kilometer, taking 3 hours each time. What is the velocity of current? अच्छा, upstream downstream है क्या? So basically क्या होता है? We have one source from where I start, and I have one destination where I need to reach. So usually when we are following this thing across a river, ठीक है? तो instead of source and destination, let's keep it A and B, right? A and B. Let's keep it A and B. So एक जगह है मेरे पास A, दूसरी जगह है मेरे पास B. So let's say the river is flowing from B to A. So there is a river which is flowing from B to A. It's the direction of flow. Now when I'm traveling from A to B, this portion is known as upstream. Upstream, why? Because the direction is against the flow of river. Against the flow of river. Okay, when we are traveling from B to A, this is known as your downstream. Why downstream? Because we are going along with the flow of river. ठीक है, अब यहाँ पर along और अपोज में क्या होता है? तो जब भी हम we are flowing against the rivers, we experience a certain velocity in the opposite direction. That has to be taken into account. अब ये velocity होती कौन सी? This is the velocity of the current. Current अब ये वो वाला current नहीं है. That current is basically the stream. So stream is also known as current. Right? The water stream is also known as current. That is also known as current. अच्छा, यहाँ पर अब क्या ध्यान रखना है? So we have two velocities to take into account. हमारे पास दो वेलोसिटी आ जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल द वेलोसिटी ऑफ पर्सन और वेलोसिटी ऑफ बोट. रोज दिया हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ बोट लेके चल रहे हैं. ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास. लेट अस अज्यूम इट टू बी x एंड द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम और वेलोसिटी ऑफ करंट. दैट इज लेट अस अज्यूम इट टू बी y. ठीक, अब हमारे पास दो कंडीशन है, एक अपस्ट्रीम की कंडीशन है, एक डाउनस्ट्रीम की कंडीशन. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व देम फर्स्ट एंड देन वी फाइंड आउट द फाइनल आंसर कि क्या है. तो जब मैं अपस्ट्रीम पे जाता हूँ, अपस्ट्रीम पे मैं जा रहा हूँ. अपस्ट्रीम मतलब आई एम गोइंग अगेंस्ट द फ्लो. आई एम गोइंग अगेंस्ट द फ्लो. सो अगेंस्ट द फ्लो जाने टाइम मेरे पास जो वेलोसिटी है दैट इज गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. दैट इज गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मेरी जो वेलोसिटी है और सामने वाली जो वेलोसिटी वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है. इसमें जो मेरी रिलेटिव स्पीड होगी, जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी, सो वेलोसिटी विल बी नथिंग बट x माइनस वन. वाई माइनस? बिकॉज जो मेरी स्पीड है उसको कम करने के लिए मेरे अगेंस्ट जो अपोजिट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम आ रही है, जो उसको कम करने की कोशिश करें. दैट्स व्हाई वी टेक इट माइनस. अच्छा, डिस्टेंस जो दिया हुआ है, डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हें 18 एंड टाइम दिया हुआ है 3 किलोमीटर. राइट, सो 3 आवर. सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा दैट x माइनस वाई स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस 18 बाय 3 और x माइनस वाई इज 6. ये मेरे पास पहली इक्वेशन हो गई. नाउ लेट्स फाइंड आउट द सेकंड वन. डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं. तो डाउनस्ट्रीम के टाइम पे क्या हो रहा है? मेरी जो वेलोसिटी है, बोट की जो वेलोसिटी है, दैट इज एडेड टू द वेलोसिटी ऑफ द करंट. सो द अपैरेंट द एक्चुअल वेलोसिटी विल बी द वेलोसिटी ऑफ बोट, और करंट जो है, जो पानी का बहाव है, उसको और ज्यादा पुश करेगा. सो दिस वेलोसिटी विल बी एडेड. द वेलोसिटी विल बी x plus y. डिस्टेंस इन दिस केस इज 30 किलोमीटर. ठीक है, तो जाने टाइम 30 किलोमीटर, टाइम इज सेम टाइम 3 आवर्स. तो इसको आप प्रैक्टिकली अगर समझने जाओगे तो समझने वाली बात ये है कि अपस्ट्रीम में वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाया, लेकिन डाउनस्ट्रीम में ज्यादा ट्रैवल करते हैं इन द सेम टाइम. सो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 30/3. so x plus y is 10. सिंपल. मेरे पास x minus y, x plus y. आई नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ करंट, मतलब मुझे y की वैल्यू निकालनी है. अब इन दोनों इक्वेशन में सॉल्व करने का तरीका यही होता है सबसे सिंपल, कि आप ऐड कर दो. लेकिन आप ऐड करोगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा. सो रेदर देन एडिंग, लेट्स सबट्रैक्ट दैट. सो इफ यू सबट्रैक्ट दिस, x minus y is equals to 6 and x plus y is equals to 10, और इसको मैं सबट्रैक्ट कर देता हूँ.
I'll get -2y, x तो कैंसिल हो जाएगा, and 6 minus 10 यानी कि -2, y is equals to 2 kilometer per hour, which becomes my final answer. सिंपल सा क्वेश्चन है, the concept of upstream and downstream should be clear. आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो. Let's try to solve the next one. Three 20 meters. Let's see what is the correct answer. So first of all, यहाँ पर मुझे ट्रेन की स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर. It passes a cyclist going in the same direction in 8 seconds. If the cyclist would have been in the opposite direction, the train would have passed him in 4 seconds. What is the length of train? ठीक है, so एक cyclist है जो साइकिल चला रहा है. Cyclist, and there is a train just passing through. So ये train जो है 88.88 meter. yeah, kind of correct. So this train is trying to cross this cyclist in two conditions. First of all, both of them they are in the same direction. In the second condition, both of them they are in the different direction. So I start from the speed of train. The speed of train, since the time is given in second, let's convert this speed of train into seconds, meter per seconds. जैसे हमने देखा था, to convert from kilometer per hour to meter per second, we'll multiply it by 5 by 80. Right. So this will become 50 by 3. Right. 6 3 is 18, 6 10 is 50 by 3 meter per second. We got this answer. Now this is in meter per second, the speed has been given. Now let us assume that the speed of cyclist, which is not given, the x meter per second. अब यहाँ से मेरे पास दो कंडीशन आ जाती है. Let's try to solve that those condition. First condition in the same direction. Right, so in the same direction. अच्छा, यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन इज नॉट गिवन, सो स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट हमने ले लिया और लेंथ हम ले लेते हैं l. राइट, लेंथ ऑफ ट्रेन भी l मीटर.
सो सेम डायरेक्शन में बात करो, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी? सो स्पीड विल बी इक्विवेलेंट टू subtraction, right? There is subtraction because we are traveling in the same direction, so the same direction the speed will be subtracted. So speed will be equal to 50 minus 3 minus x meter per second. Time, अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम इज इक्विवेलेंट टू 8 सेकंड जो मुझे दिया हुआ है, right? And distance, जो distance cover करना है, that is equivalent to the length of train, right? So the length of this train, that is the distance, will be equal to speed into time. Length of train will be equal to speed into time, यानी कि 500 by 3 minus x into 8, right? That is no, let's do it simple in a simple way. मुझे पता है कि भाई distance जो है that is equal to speed into time. So 500 by 3 minus x into 8, and this distance is going to be equal to the length of train, that is L. If you solve this up, you'll get, it's not 500, it's 50. 400 upon 3 minus 8x is going to be equal to L. This is our first equation. Now let's talk about the second case in the opposite direction. When they're coming in the opposite direction, their speed gets added up. Right, so speed will be opposite to what we had earlier, that is 50 by 3 plus x. Time in this case is going to be less because दोनों opposite direction में आ रहे हैं, तो time कम हो जाएगा. Distance, the same distance has to be covered, so 50 by 3 plus x speed into time is equals to n. और यहाँ से मुझे एक दूसरी इक्वेशन मिल जाती है, 200 by 3 plus 4x is equals to n. Now I need to solve equation number 1 and equation number 2 to find out the value of L, because L is what is supposed to be find out. But यहाँ पर अगर आप देखो तो दोनों में RHS सेट पे L है, so first of all you can find out x, that will be easier. So from 1 and 2, if I solve, I'll get 400 by 3 minus 8x is equals to 200 by 3 plus 4x. And let's solve this up, you'll get 200 by 3 is equals to, become 12x, or x is equals to 200 by 3 into 12. We can cancel it by 4, so we'll get 50 और नीचे मेरे पास आ जाएगा 9. What is x? X is the basically the speed of cyclist in meter per second. So x आ गया मेरे पास. Now I can find out the value of time, sorry, length. So L आप equation 1 में डालो या 2 में डालो, that's your choice. I'll put it in equation 1. So I get 400 by 3 minus 8 into 50 by 9. Right, so 400 by 9 it will be equivalent to, so 400 by 3 minus 400 by 9. So this will, if you take the LCM, this will come 1200 minus 400 by 9 is equals to 800 by 9 meter. This is the length of train, and if you convert it into decimal, it will be somewhere nearby जो आपने आंसर बोला 88.8 something. So this is the final answer. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, but if you go with the basics, it is quite simple to solve. तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके. Try to solve this one.
375 meters. Five 75 meters. Let's try to see what is the correct answer. A train is running with a speed of 90 kilometers per hour. It crosses a platform in 15 seconds. The length of train is 200 meter. What is the length of platform? Okay. So यहाँ पर मुझे दो चीजें दी हुई है. First of all, length of train. So there is a train. Let's assume this to be single train. ऐसे मान के चल रहा हूँ मैं. And the length of this train is 200 meter. This train is there, and this is crossing a platform. ठीक है, तो यहाँ पर मैं platform बना देता हूँ. And we need to find out the length of platform. So let's say this is the platform. Let's say the length of platform will be LP for our convenience. So the important thing to understand over here is how do you think the train will be crossing the platform, or what is the point when you consider the train will be crossing the platform? This is the starting point of train. This is the end point of train. Right. So जब train ये यहाँ से ऐसे cross करके चली जाएगी, right? तब मैं मानूंगा कि भाई train has crossed. The starting point is over here. The ending point is over here. So ये जो point है, ये condition जो है, condition A है और condition B है. So from A to B जब train जाएगी, then only I will say that train has crossed the platform. कहने का मतलब क्या है? What I mean to say is this distance to this distance. This is the total distance traveled by the train to cross the platform. This is the distance traveled by the train to cross the platform. अभी distance किसके बराबर है? Distance दो चीजों के बराबर है. Length of the platform and the length of train as well. अब length of train हमने देखा इससे पहले 200 मीटर है. ये चीजें मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको? I'll tell you in short time. So let's go back to the question. A train is running with a speed of 90 kilometers per hour. So speed of train क्या दिया हुआ है? 90 kilometers per hour. 90 kilometer per hour. And if you convert it into meter per second, it becomes 5 by 18. आप simply करोगे, so 18 5 is 90, so it becomes 25 meter per second. So ये speed है train की. Now it crosses a platform in 15 seconds. तो प्लेटफॉर्म क्रॉस करने टाइम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हो तो वो देख लेते हैं. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, एक तो उसने खुद का जो खुद का प्लेटफॉर्म का लेंथ है वो ट्रैवल किया एलपी, प्लस इट हैज आल्सो कवर्ड द लेंथ ऑफ द ट्रेन दैट इज 200. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है उन्होंने एलपी प्लस 200 किसने? ट्रेन में. एंड टाइम टेकन फॉर दिस वन इज 15 सेकंड. ठीक, अब मुझे पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. बस इसको हम यहाँ पर कंप्यूट कर लेंगे. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस दिया हुआ है एलपी प्लस 200, स्पीड इज 15 and time is 25. If you do it, it will become LP plus 200 is equals to 375, or the value of LP, that is length of platform, it will become 375 minus 200. Okay, that will be equivalent to 175 meter. The length of platform will be equal to 175. देखो ये फंडा यहाँ पर समझ में आना चाहिए. This is an important fundamental which is used in all such kind of questions. जब ये ट्रेन जो है जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, so over here there will be two distances which will be added. First of all the length of train and the second one is the length of platform. इन दोनों चीजों को ऐड किया जाएगा. That is the total distance covered by the train by crossing the platform. ठीक है, यहीं पे एक और क्वेश्चन बनता है. I guess that will be your next question only. आगे है हमारे पास जहाँ पर हमारे पास दिया होगा the train is crossing a pole. एक सिंगल पोल को क्रॉस कर. अब उस केस में देखो यहाँ पर तो हमारे पास लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, लेकिन पोल की कोई लेंथ होगी नहीं. पोल की सिर्फ हाइट होती है, उसकी लेंथ नहीं. इन दैट केस एलपी विल बी 0. सो उस केस में सिर्फ जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन. उसमें प्लेटफॉर्म का कोई कंसीडरेशन नहीं होगा, सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन होगी. चलो क्वेश्चन जब आएगा तब हम देख लेंगे उस चीज को. हेलो सर, यस, ये लेंथ ऐड नहीं होंगी? प्लस 200 ऐड होना चाहिए ना? ऐड किया ना मैंने, माइनस के मैंने ऐड किया हुआ है इधर. इफ यू सी, देखो यहाँ पर मैंने वही चीज बोली कि जब हम यहाँ पर ट्रैवल करें, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन है, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? एक तो प्लेटफॉर्म की जितनी लेंथ है वो ट्रैवल करेगी और 200 मीटर उसकी खुद की लेंथ है.
So ये दोनों ट्रैवल करेंगे, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा दैट विल बी LP प्लस 200, जो मैंने यहाँ पर किया हुआ। इफ यू सी LP प्लस 200 मैंने किया हुआ, और यही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना वो लगेगा, तो स्पीड इनटू टाइम मैंने किया हुआ है। तो स्पीड इनटू टाइम किया तब इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ LP प्लस 200। अभी 200 सामने जाके माइनस हो गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. Try to solve this one. Okay, before you waste much time on this question, I'll tell you there is a catch over here that you need to understand. A sailor covers a distance of 5 hour downstream and 3 hour upstream. देखो downstream में मतलब you are flowing along with the river, and upstream में you are flowing against the river. So now we are flowing along with the river. In that case, the time should be lower, and when you are flowing against the river, in that case, the time should be higher, more. Right. So ये जो catch ये कि भाई ये जो question में mistake है यहाँ पर, that 5 hour is upstream, that is against the river, and 3 hour is downstream, that is along the river. So along the river में कम time लग रहा है और against the river it is more time. Now you can solve this. Okay, let's see what is the correct answer over here. See, यहाँ पर ना एक और you can think the thing that you can use over here in this question is the distance. The distance is same in both the case, whether you are going upward or upstream or downstream. The distance is constant. Right? Distance is constant. So if I use this catch, I can say that the distance in upstream is equal to the distance in downstream. और मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस क्या होता है हमारा, डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम. सो स्पीड इन अपस्ट्रीम इनटू टाइम इन अपस्ट्रीम is equals to speed in downstream into time in downstream.
अब यहाँ पर हम थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं for our better understanding. Let's assume that the speed of boat dx, speed of river दिया हुआ है हमें 4. अपस्ट्रीम में जब हम जा रहे हैं, so we are going against the river, so it will become x minus 4. डाउनस्ट्रीम में जब हम आ रहे हैं, we are going along with the river, so it becomes x plus 4. ठीक है, ये हो गया मेरे पास, ये स्पीड हो गई ना, स्पीड मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड इन बोथ द केसेस. Speed in upstream, speed in downstream. Let's substitute the values over here. The speed in upstream जैसा हमने निकाला, it is x minus 4 cos time in upstream is 5 hours. This is equals to speed in downstream is x plus 4. Time in downstream is 3 hours. Let's solve this one. So this will give you 5x minus 20 is equals to 3x plus 12, or 2x equals to 32. If I'm not wrong, yes, and x equals to 16 meter per second. Oops, this is 32. 20 यहाँ पर आके 32 हो जाएगा. So x is 16 meter per second, and that is what speed of boat is, right? हमने ये assume किया हुआ है speed of boat. So your final answer is 16 kilometer per hour. Let's see the next one. Okay, let's try to solve this one. This is a typical question, and before I actually start solving this, I'll give you a short hack. 44. Yeah, that's correct. Very good. 44 is the correct answer. I'll give you short hack कि जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पर किसी चीज को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा रहा है, always prefer to use ratios over here. Always use ratios in such questions. You have to use ratios in such questions. कहने का मतलब क्या है? Ratios will make your answer easier in case of increase or decrease. Let's try to understand how. So the train increases its speed by 10% and reaches 4 minutes early. So 10 minutes increase किया हुआ है. So I can say if I convert it into ratio, so increase will be 10%. That is 10 by
100 और 1/10 simply. Now 1/10 increase किया हुआ है. If I assume the denominator to be the original speed, right? So the new speed will be, ये मेरी ओरिजिनल स्पीड है, ठीक है, एंड दिस इज द इंक्रीज. ओरिजिनल स्पीड पे अगर मैं 1 यूनिट इंक्रीज करता हूँ तो न्यू स्पीड विल बी 11/10. ये मेरी 11/10 ऑफ ओल्ड स्पीड, ठीक है. अब ये चीज मेरी आ गई 11/10 स्पीड हो गई मेरी ऑफ द ओल्ड स्पीड, न्यू स्पीड बाय ओल्ड स्पीड. अब मेरे को एक चीज पता है, फॉर टाइम, फॉर डिस्टेंस टू बी कांस्टेंट, फॉर डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो मैं बोल सकता हूँ स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो यहाँ से अगर मेरे को बोला हुआ है कि न्यू स्पीड इज 11/10 ऑफ टाइम, सो न्यू टाइम विल बी 10/11 ऑफ ओल्ड टाइम. ठीक है, मतलब ओल्ड टाइम 11 था और नया टाइम जो हो गया है वो 10 हो गया. तो कितना कम हुआ है? 1 यूनिट पे कम हुआ है, राइट. सो डिक्रीज इन टाइम, डिक्रीज इन टाइम इज 1 आउट ऑफ 11. ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास 11 यूनिट था, अब हमारे पास 10 यूनिट टाइम बच गया है. सो 1 यूनिट कम हुआ है, लेकिन 1 आउट ऑफ 11 कम हुआ है. ठीक है, नाउ दिस 1 आउट ऑफ 11 इज इक्विवेलेंट टू 4 minutes. This is equivalent to 4 minutes. Now 1 out of 11 equals to 4 minutes, so 1 will be equivalent to 44 minutes, and that was the original time taken by train. ठीक है, तो 44 टाइम लग रहे थे, अब स्पीड उन्होंने बढ़ा दी 10%, तो अब 40 मिनट्स लग रहे हैं, 4 मिनट्स अर्लियर. This is how you can get the simple answer in a very easier. एक्सक्यूज मी सर, Yes. प्रीवियस सम सर, इसमें 11/10 कहाँ से आया? देखो समझो, यहाँ पर हमें ऐसा दिया हुआ है, the train increases speed by 10%. 10% स्पीड बढ़ी है, मतलब 10/100 बढ़ी, यानी कि 1/10 बढ़ी. तो 10 मेरी ओरिजिनल स्पीड है और एक इंक्रीज हुआ है, मतलब 10 + 1 यानी कि 11 हो गया. मैं बोल सकता हूँ जो मेरी नई स्पीड है, न्यू स्पीड इज 11 एंड माय ओरिजिनल स्पीड वाज 10. यहाँ से मेरे पास आ जाता है कि माय न्यू स्पीड इज 11/10 टाइम्स ऑफ ओल्ड स्पीड और ओरिजिनल स्पीड. वहां से आता है. ओके. Okay, let's do the next one. And this is going to be the last question for today. So try to solve this one. बहुत अच्छा है. Average, sorry, distance के बीच में, the distance time of okay, distance निकालना है आपको, total distance निकालना है. Okay, let's see what is the correct answer. Rachita goes to office at speed of 7 kilometers per hour and returns to her home at a speed of 4 kilometers per hour. She takes 22 hours in total. What is the distance between her office and her home? तो क्या दिया हुआ है हमें? टोटल टाइम दिया हुआ है. टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं टाइम. टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. नाउ लेट्स अज्यूम कि भाई ये उसका घर है. दिस इज योर होम एंड दिस इज office. The distance between home and office be d kilometers per hour. ठीक है, d किलोमीटर हम मान के चलते हैं. सो दो कंडीशन आती है. पहली कंडीशन क्या बोल रहा है? टाइम, टोटल टाइम अगर मैं बता दूं, टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 22 आवर्स आने जाने का मिलाकर. ठीक है, तो दो केस आते हैं. एक तो गोइंग फ्रॉम ऑफिस, सॉरी, होम टू ऑफिस एंड देन ऑफिस टू होम. सो होम टू ऑफिस की पहले की बात करूं तो उसमें दिया हुआ है ऑफिस एट अ स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर. सो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है d और स्पीड कितनी है? 7 किलोमीटर पर आवर. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. प्लस सेकंड कंडीशन कितना है? अगेन डिस्टेंस कितना है? d, स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर.
and this all together is equivalent to 22. बस इसको आपको solve करना है. So this will become d 1 plus 7 plus 1 by 4 plus 22. 28 4 plus 7. This will become, this is 22 and this is d. इसको अगर आप solve करते हैं, you get 22 into 28 by 11, which is nothing but 56 kilometers. The final answer will be equal to 56 kilometers. This was a simple question. I don't think it was much complicated. This thing is you need to understand कि distance कैसे consider करना है. Total time दिया हुआ है. Total time के केस में हम क्या करेंगे? दोनों चीजों को separately दिया हुआ है. Yes. No, no. Fine, so we'll keep it up to here for today's class. We'll see you in the next class. कल के time का कल class का time I'll update you once. Most probably it will be a little bit earlier. Maybe 6:30 होगा. Still I'll update you once. Thank you. Okay, Yes. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.